So today we are going to discuss फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So now we are going to discuss bonding. In bonding, basically we will discuss today hybridization and Vesper theory. Basically we discuss about the shape of the molecule. So the video was only shape of the molecule, and it was obviously it is related to chemical bonding. So some basic concepts there. So now the topic is bonding, and all of you know what are the types of bonding: covalent bond, ionic bond, metallic bond, coordinate bond. And what is the meaning of covalent bond? There is a love, share each other. There is a sharing of love. Ionic bond, love, give and take. Metallic bond, love is always flow. And coordinate bond, one-sided love, but feelings both. Okay, so now the two atoms talking together. I am about to lose an electron because I'm not feeling unstable. Are you sure? Second one, yeah. So now I am positive, I am negative, but I'm feeling also stable. So both are stable. So this is electrostatic force of attraction. Now this can be also discussed. The ionic bond, one big greedy thief dog. You can see, okay. So now how are covalent bond formed? Okay, so how do non-metals atom form covalent bond? You can see this is a common room for all non-metals, and all non-metals are sitting in a common room. They are just sharing with each other their happiness. They're spreading their happiness, sharing their feelings, and with anyone जिसके साथ भी suitable है, they are just sitting with them. Just Cl sitting with Cl, so there is the bond is formed. Hydrogen is sitting with Cl, so hydrogen chloride bond is formed. So wherever they are getting, किसी के साथ bonding है, they are just sitting in a common room. Wherever they are getting the place, sofa पे मिल गया, table पे मिल गया, chair पे मिल गया, whatever. So now this is the covalent bond formation. Okay. Okay, this is covalent bond, just like sharing of electron, and bond is formed. Now, all of you know that there's a covalent bond is sharing of electrons, and there's a two type of covalent bond, polar covalent and non-polar. You can see over here. So hydrogen, non-polar covalent bond, hydrogen, both electrons are equally pulling with each other. While in case of this hydrochloric acid, HCl, you can see Cl is more negative, more bhuka about electrons. So pulling all the electrons towards itself, maximum electrons is pulling toward itself. So the electrons polarities, electrons are on Cl side. So Cl becomes more, Cl is negative, and hydrogen is in respect positive. So this is polar. Non-polar covalent bond, all of you know, when electrons are shared equally. And polar when electrons shared unequally, just like a water. Now this polar covalent bond, unevenly matched but willing to share. Okay, so you can see this one also. Yeah. So what is a polar molecule? Because oxygen is more electronegative than hydrogen, and therefore electrons are pulled closer to oxygen. So now this polarity, I'm not discussing this because this is a comic strip. So bonding can be discussed using some comic strip also. So there's all the stories are there, and finally there is a formation of bonds between carbon oxygen, that is a linear and trigonal planar, bent, etc. So now after finishing this type of, so just we have discussed there is a four type of bonds: ionic bond, covalent bond, metallic bond, and coordinate bond. Now you can compare or you can distinguish between all these four type of bonds on the basis of thermal conductivity, electricity, okay, hardness, etc., melting point, boiling point. So you can see all are copper, carbon is diamond, NaCl, and iodine. They are sitting ideally, and they are. So now how does your knowledge of bonding can compare? So you can make, you can tell to the students, you can make the four charts. Okay, you can make four tabular in a tabular form, and just tell this, and you can give something more also. Compare their melting point, boiling point, conductivity, which one is conductor, which one is insulator. Okay, so like this they can compare, and what is the reason for that. Okay, so now after that, just execute. You can see.
So we have just discussed these are bonding, and the bonding, what is the purpose of bonding? All of us know, because to attain the stable configuration or to attain the stability. Okay. So bonding is always formed by either sharing of electron or by transfer of electrons. So we are discussing about covalent bond by sharing of electrons, and this can be shared by on the concept of Lewis dot structure. So according to Lewis dot structure, the valence electron participate by sharing of electrons. जैसे कार्बन के ये डॉट है, these are the yellow dot of carbon 4 electrons. Hydrogen is sharing 1 electron of each. This is according to Lewis dot structure. Okay, so after that the structure form is this. So Lewis dot structure, Lewis dot structure is not deciding about the shape of the molecule. Basically today my topic is the shape of the molecule. तो बॉन्डिंग तो हो रहा है, दिख रहा है, बट शेप ऑफ मॉलिक्यूल वी आर नॉट डिसाइडिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर द एंगल इज कमिंग 90 degree and the shape is like this. It is 2D structure because we cannot form the 3D structure, so we cannot decide about the shape. Okay, this shape is what? Okay, so for this we have to study about what any shape of the molecule can be decided by Vesper theory. What is the full form of Vesper theory? Valence shell electron pair repulsion theory. So you can see over here also. Yeah. Okay, previously it was a straight line, 2D structure. Now it become 3D. Why it happens? Anyone can say? Okay. Why the bond has been tilted downward side, or they repel with each other, they away from each other? Anyone can say? To attain stability, electron pairs are maximum far apart. Yeah. So these are the shared electron. Electrons are closer to each other. So this is called bond pair electrons. And between the bond pair electrons, there's a repulsion occur. And due to repulsion, the shape is coming this. So actually the Vesper theory decide about the shape of the molecule just because of repulsion between the electrons, repulsion between the pair of electrons. So the head full form of Vesper is what? Valence shell electron pair repulsion. So according, what is the meaning of this? According to this bond formation, only valence shell electrons participate in the bonding, and these valence shell electron participate in the bonding, and electrons after bond formation, electrons always present in the form of paired electrons. And when electrons are paired and closer to each other, the repulsion occur, and due to repulsion, actually shape we get it, right? So now you can see this is the tetrahedral structure like methane. Methane is not actually this 90 degree angle, or what is the angle between this? Sorry. So what the angle is coming, you can see. Okay, leave it. Now this is the another one example. Then after I will explain about the Vesper theory. This is formaldehyde. Simply there is a sharing of electron, which you have taught in class 10th also. Okay. So now this bond formation, simply when in class 10, the students draw this structure only. But when they study about the shape of the molecule, now again there is a repulsion between the paired electrons according to this theory, Vesper theory. And you can see what the shape is coming. And what the bond angle is now coming, 120 degree, right? So now we are going to discuss about the molecular geometry. These are the molecular geometry. These are the molecular shape. Okay, some common geometry are this: linear, trigonal, tetrahedral. Okay, so like this. Okay, so now according to these shapes, how these shapes are coming? The question is this: how these shapes are coming on the basis of Vesper theory? Okay, so according to Vesper theory, when we discuss about this, just a minute. Okay, the shapes depends on the total number of electrons. ठीक है, कोई भी shape हमारा draw हो रहा है, वो किस तरह का shape आएगा, 3D structure में what type of shape will come, it depends on the number of electrons. So if the total number of electron is 2, the shape will be linear and the bond angle will be 180. So these are the total number of electrons, 2 number of electrons, total electron pairs are 3, shape will be trigonal, 4 tetrahedral, 5 trigonal bipyramidal, 6 octahedral, and the bond angles are mentioned 120 and 90 degree, etc. So these shapes are coming when these geometry and shapes are coming when there is a no lone pair, only bond pair electrons are present. Okay, but when the lone pair electrons will be present, in case of if the total electron pair is 3, the geometry is trigonal planar. Okay, so this shape will be trigonal planar if the 3 total electrons will be bond pair. तीनों के तीनों bond pair है, तो shape will be same. But if
Out of 3, 2 will be bond pair and 1 will be lone pair. The shape will be distorted. The shape will be, geometry will be trigonal planar, but shape will be not that. That will be bent shape, right? And the bond angle will be also changed accordingly. Similarly, for 4 also, 4 ke case mein, if 4 electrons, there is a no lone pair, that is 0 lone pair, again the shape will be tetrahedral. But as the lone pair electron increases and bond pair electron decreases, but the total is 4, the shape will be also distorted. Tetrahedral, trigonal, pyramidal, bent shape. I will explain. Okay. So now this is trigonal bipyramidal. So for 5 also same, 5 trigonal bipyramidal, 4 plus 1 seesaw, 3 plus 2 T shape, 2 plus 3 linear shape. For 6 also, if the total 6 are bond pair electrons, no lone pair, that is non-bonding electrons. Octahedral, if 1 lone pair and 5 bond pair, 2 lone pairs, 4 bond pair, then shape will be square bipyramidal and square planar. Okay. So by this Vesper theory, we can discuss about the shape of the molecule, and hybridization also can be discussed. Basically, hybridization, there is another concept, but in shortcut, or we can say when the students is attempting any MCQs questions or for competitive exam, if they will study about the Vesper theory, they can decide, they can also predict the hybridization also. So if the total electron pair 2, the shape is linear and the hybridization will be sp. 3 trigonal planar, that is sp2. 4 tetrahedral, sp3. 5 trigonal, sp3d. 6 octahedral, like this. Okay. So now I will explain something more in just a minute. Better you can understand by this. What I told, just I told about this thing. Okay. So according to just I told carbon, okay. Carbon having how many valence electron? 4 valence electron. Okay. And hydrogen is sharing. And hydrogen has 1 valence electron. Okay. So there is a sharing of electron like this. Okay. So, and after sharing of electron, there is a simple structure, 2D structure, which we draw is this. So shape is not decided. And the bond angle is coming what? 90 degree. Okay. But actually, so these are the bond pair electrons. This is bond pair electrons. So between bond pair, so this Vesper theory actually what describe valence shell electron pair repulsion theory, repulsion between bond pair electrons and lone pair electrons. Okay. So one example I'm just going to say about what is the meaning of lone pair electron. We take one more example so that you can understand easily. Ammonia, we can take one example, that is ammonia, NH3. Okay. NH3, which one is a central atom? Nitrogen is a central atom. Okay. Nitrogen having how many valence electron? All of you know the configuration. 2, 5. Okay. So 5 valence electron. Okay. According to valence shell, only valence shell electrons, valence shell electrons participate in bonding. Okay. So these 5 are valence shell electrons. Okay. And same hydrogen. Okay. 3 hydrogen, and hydrogen is sharing 1 electron each. Okay. Okay. So these are the shared electron. This shared electron is called bond pair electron. Okay. So how many bond pair electron? You can see 1 bond pair, 2 bond pair, 3 bond pairs. So there is a 3 bond pair electrons. Okay. How many? And this is unshared electron. How many unshared electron? 1. Okay. So the electron which are not sharing with each other, that is called lone pair electron. Okay. So there is a 3 bond pair and 1 lone pair electron. Total is coming what? 4, right? Okay. Now in this case, you can see methane also. Methane में total bond pair कितने हैं? There is a 4 bond pair electron. तो यहाँ भी total 4 आ रहा है, ठीक है? And there is also total is coming 4. One more example I can discuss with you. Okay, like water. Water central atom is what? Oxygen. What is the configuration of oxygen? What is the valence electron of oxygen? 6 valence electron, right? So oxygen having 6 valence electron. Okay, like this I can write. And hydrogen sharing
one electron. Okay, so these are the shared electron, one shared electron, two shared electron. So we simply can say two bond pair electron, and these these are not shared electrons, so these are called what? These two electrons are called what? These are called lone pair electron. So there is a two bond pair electrons and two lone pair electrons, right? The total is coming 4. So you have seen in water, oxygen में भी total electron pair 4 आ रहा है. In ammonia it is also coming total electron pair 4. In CH4 the total electron pair is coming 4, right? सभी में 4 4 आ रहा है, एंड 4 की ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, दैट इज ज्योमेट्री. सपोज मीथेन CH okay, so geometry is coming tetrahedral and the bond angle is coming what? 109.5 degree. Okay, now in case of ammonia में this is 3 bond pair and 1 lone pair. ठीक है, इसका शेप तो तुमने बताया, that is what? Tetrahedral. Okay, total electron pair here is also 4, but the shape is not tetrahedral because the lone pair does not consider in the shape. इसको हम shape में consider नहीं करते हैं. So now the shape is coming what? Pyramidal shape. Even water, in water there is a 2 lone pair. Again the shape is not considered about this. The lone pair is not considered in the shape. Okay, so now the shape is coming what? Bent shape, right? And the bond angle also decreases, 109.5, 107 degree, 104 degree. So what you're observing, the total electron pairs same in all cases, but the shapes are different and bond angle also start decreases. What is the reason for this? Because of repulsion. And what repulsion? Here is only one type of repulsion. That is what? In methane, there is only bond pair repulsion. Okay. And in ammonia, there is a bond pair and one lone pair is there. So there is a one repulsion arises. That is what? Just a minute. बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन. Yeah. एक सेकंड, इसको इरेज कर दो थोड़ा सा. Vaishal ma'am, there is a question. Just a minute, sir. Wait. And there is the oxygen. Okay. So now in ammonia, there is a bond pair and lone pair repulsion. मैम इसके रिलेटेड है ना. एक सेकेंड. एंड इन व्हाट? हाँ बोलो सर, बोलो. मेरे कहने का मतलब, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर बना रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल. Yes, sir. So dipole का बजाय क्या मुझे बच्चे पूछे थे why they don't collapse with each Yes, other? yes. I will show that one. I will show that one also. Sir, I will show. Definitely I will show. ठीक है, अभी दिखा रही हूँ उसको भी. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर. यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन. यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ गए, यानी एक और रिपल्शन बढ़ गया, दैट इज व्हाट? लोन पेयर रिपल्शन. या एंड मैक्सिमम जो रिपल्शन होता है लोन पेयर में होता है, यानी द लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर. तो एज रिपल्शन इंक्रीजेस ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. सो दिस इज द रीजन कि है सबकी total electron pair same hai, but bond angles have start decreases because of different repulsions, right? Okay, now the question is this is the Vesper theory. Vesper theory actually explain about the shape of the molecule and bond angle between the atoms, and this depends on the repulsion. That depends whether bond pair or bond pair lone pair repulsion or lone pair repulsion. Okay, now the question is this कि हमें ये total electron pair find out कैसे करना है. If we'll find out the total electron pair या हम bond pair lone pair का find out कर सकते हैं, तो हम geometry भी find out कर सकते हैं, right? और shape भी find out कर सकते हैं. तो this total electron pair can be find out using okay, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ. सपोज आपका मीथेन है, मीथेन का आपने शेप क्या बताया? द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 एंड द शेप इज कमिंग व्हाट? टेट्राहेड्रल. इवन हमने अभी जो बताया इसी एग्जांपल को. ओके, तो अगर हमें ये 4 बॉन्ड पेयर है या 4 आ रहा है, कैसे आ रहा है? इसके लिए मैं बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी यूज करती हूँ क्लास 11th में. अच्छा, दिस टॉपिक व्हाई आई हैव चोजन बिकॉज इट इज कॉमन फॉर बोथ क्लास 11th एज वेल एज 12th के बोर्ड एग्जाम में वेस्पर थ्योरी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है? एंड 11th का सिलेबस तो है ही है. नाउ अच्छा, कैसे करते हैं? ओके, व्हाट हाउ टू प्रेडिक्ट द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर? कैसे करते हैं? वी टेक द सेंट्रल एटम, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4. सो वी जस्ट ड्रॉ द 4 डॉट्स. ओके, नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? ये हो गया. तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर्स हो गया. टोटल कितने आपके बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं? व्हाट आर द टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हियर? 4 बॉन्ड पेयर.
and how many lone pair? 0 lone pair. तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर है एंड टोटल इज कमिंग 4. टोटल का ज्योमेट्री हमेशा हम यही कहते हैं, आप पहले ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको जो सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एज अ सराउंडिंग एटम, सो यू कैन ड्रॉ दिस शेप, राइट. ऐसे अगर मान लो आपको अमोनिया का करना है, तो अमोनिया के लिए आप क्या करोगे, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, बाकी नेक्स्ट हम करेंगे. नाउ इन केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम, ओके. तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. So you can draw 5 dot 1 2 3 4 5. How many hydrogens are there? 3 hydrogen. 1 2 3, and hydrogen is sharing 1 electron each. So this shared is called bond pair. 1 2 3. So there is a 3 bond pair. But this 1 electron which is not shared, that is lone pair. 1 lone pair. That total is coming again 4. सो 4 का मतलब ही हमने जस्ट बताया था कि वी हैव टू ड्रॉ द शेप लाइक दिस. 4 मीन्स ऐसे बना दो, ठीक है. नाइट्रोजन वी आर कीपिंग ओवर देयर, 3 हाइड्रोजन्स आर देयर, बट देयर इज अ नो any surrounding atom. So what we keep the lone pair, or we can keep in this also, Lobel form also. So now the shape lone pair वो हम shape में नहीं consider करते हैं. So now the shape is coming pyramidal shape. I think that it is clear to all of you. Yes or no? ठीक है. नाउ सिमिलरली अगर हम एक ऑक्सीजन का भी ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन में कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6. अगेन वी आर मेकिंग 6 डॉट, ओके. सो 2 हाइड्रोजन, 1 and 2, 2 hydrogens are there, 2 bond pair, and how many lone pair? 2 lone pair. So there is a 2 bond pair and 2 lone pair. The total is coming again 4. So how to draw the shape? Again tetrahedral. बीच में ऑक्सीजन रखा, हाइड्रोजन रखा, और दो साइड में हमने क्या कर दिया? लोन पेयर रख दिया. तो अगेन शेप इज कमिंग बेंड शेप. सो नाउ इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हो, along with bond pair, along with lone pair. Okay. हाँ जी सर, आप बोलो, आप कुछ कहना है तो कहो, अदरवाइज आई विल शो समथिंग एल्स. कहने का मतलब था कि वाटर मॉलिक्यूल में क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोलैप्स नहीं कर जाते इफ दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? व्हाई दे सर वो गिव ए पॉजिटिव डिफरेंट शेप नेगेटिव टू कंप्लीट डाइपोल? नहीं है सर. ओके, एक सेकंड मैं इसको लास्ट में बताती हूँ. सो ये जो आपको मैंने भी बताया, जस्ट आई हैव शोन दिस वन आल्सो, ओके. तो अगर हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि वेस्पर थ्योरी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का शेप क्या होता है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ रहा है तो उसका शेप लीनियर हो गया, ठीक है. इस तरह से अगर हमने बच्चों को बता दिया, एक सेकेंड बेटर आई कैन शो, ओके. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, okay, so if the total electron pair 2, the shape is coming linear. If the total electron pair 3, the shape is coming trigonal planar. अब यहाँ पे हम बता सकते हैं सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया. बट अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो गए, लेकिन अगर हमारे हो सकता है 2 ही बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, बट टोटल जो तुम्हारा है वो टोटल इज कमिंग 3. तो शेप इज व्हाट? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, बट दिस शेप इज व्हाट? बेंड शेप. सिमिलरली आप 4 में भी करते हो, 5 में भी करते हो. 4 का मतलब टेट्राहेड्रल. मान लो हमने 4 को 3 तरह से बना दिया, यहाँ चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर देयर, टेट्राहेड्रल. यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर है, दिस इज पिरामिडल शेप. यहाँ 2 लोन पेयर है और 2 सराउंडिंग एटम, और बीच में कोई भी सेंट्रल एटम रख दिया, ठीक है. तो इस तरह से तुम्हारा शेप एक ही से बच्चा डिसाइड कर लेगा. And if student will know about the concept of total electron pair and the shape, then student can find out any example. I will give you all of you, मैं भी आप लोग को एक example दूंगी last में, ठीक है, and you will draw the shape. Any molecule I will give you and you will also draw the shape. एक second. Okay, then after, just a minute. ये हमने बता दिया. अब हमें करना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने सीखा कितना है, हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड एंड हाउ दे कैन अप्लाई. तो बेटर वी कैन एंगेज, इसको हम बच्चों को अगर एंगेज कर देते हैं, दैट इज एक्टिव एंगेजमेंट, आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग, तो दे विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. हाउ? बाय दिस वेस्पर मॉडल यूजिंग बलून्स. अगर हमने बलून से कर दिया तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. हाउ विल डू इट? वी कैन मेक, ऐसा कर सकते हैं कि पूरे क्लास में हम बलून्स दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद या 10-10 की टीम बना लेते हैं. 10 बच्चों को कहते हैं हर बच्चा 2-2 बलून्स को ब्लो करेगा, एंड नेक्स्ट 10 टीम्स को कहते हैं कि ओके 10 टीम्स विल ईच स्टूडेंट विल ब्लो 2 बलून्स, ठीक है, और कीप असाइड. नाउ नेक्स्ट टीम विल कम, 10 स्टूडेंट्स विल कम एंड दे विल स्टार्ट टाइंग अप. कैसे टाई अप करेंगे दैट आई विल शो यू, ठीक है. ओके,
हाँ, जैसे हमारे बच्चे, ओके, मैं दिखाई दे रही हूँ तुम लोगों को सबको? Am I visible for Yes, everyone or ma'am. not? Ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या इसको मिनिमाइज कर दूं? Yes, ma'am. Stop screen share कर लीजिए. We can put you on speaker view. मुझे दिख नहीं रही हूँ, मैं नहीं दिखाई दे रही मैम आप वैसे। पीपीटी बंद करके हम स्पीकर व्यू में डाल सकते हैं. मैम आप स्टॉप शेयरिंग कर दो. हाँ जी. नहीं नहीं, स्टॉप शेयर. ओके। सो नाउ एक्टिव एंगेजमेंट लर्निंग के लिए क्या कर सकते हो? जैसे बलून हमने बहुत सारे कल रात को ही ब्लो करके रख लिया था ये सब, बिकॉज सुबह मैं लेट उठती हूँ थोड़ा। तो इस तरह से अब बच्चों को हमने क्या करना है, बच्चों को कहना कि टाई करो, स्टार्ट करो 2 से टाई करना, अपने आप टाई करते जाओ, उसको कीप असाइड, फर्स्ट 2 टाई, फिर उसके बाद से नेक्स्ट बच्चे को बोलो 3 बलून्स को टाई करो, 4 को टाई करो, लाइक दिस. सो द स्टूडेंट विल स्टार्ट टाइंग इट अप. ओके, बलून्स हमने ब्लो करके साइड में रख दिया हुआ है, ठीक है. सो व्हेन दे विल टाई, दिस इज दे विल टाई 2 बलून्स फर्स्ट, ठीक है. एंड नाउ आफ्टर ऑलरेडी वी हैव टॉट द कॉन्सेप्ट, अब उनको बोलना कि शेप क्या दिख रहा है, व्हाट द शेप इज दिस वन, क्या शेप दिख रहा है? Linear. Linear. फिर हमने इससे टाई कर दिया, अब क्या शेप दिख रहा है आपको? Planar. कहीं से ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, या ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. ओके, अब इसी में आप एक और टाई कर दो, अगेन यू टाई वन मोर, ठीक है. तो क्या आपको दिखाई देगा? व्हाट यू विल सी, what you can see, tetrahedral structure. इस Tetrahedral. तरह से बच्चा स्ट्रक्चर भी अपना खुद बच्चे ने टाई किया है, खुद बच्चे ने स्ट्रक्चर देखा है, खुद बच्चों ने इसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे. ये आपका हो गया क्रिएटिविटी, हो गया आर्ट, हो गया, दे कैन ड्रॉ इवन आल्सो, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 4 टाई किया है. ओके, सिमिलरली इसी 4, हाँ सॉरी, ओके, सो यहाँ पे 4 टाई किया है. सिमिलरली अगर हमने इसी में एक 4 टाई कर दिया, ठीक है, 4 टाई कर दिया. अच्छा, यहाँ पे हम ये कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये दिस इज मीथेन एंड दिस इज अमोनिया. अब यहाँ